हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरोएनाटमी जो हम स्नेल से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम स्नेल व्हिच इज सेरिबेलम and its connections. So we have already talked about cerebrum and different parts of cerebrum. Now today we are going to talk about cerebellum. Cerebellum is situated in the posterior cranial fossa and is covered superiorly by the tentorium cerebelli. ये हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो cerebellum है इसके ऊपर जो ड्यूरा मैटर का फोल्ड है that is known as tentorium cerebelli. It is the largest part of the hindbrain. cerebellum की बात हो रही है and it lies posterior to the fourth ventricle. अभी मैं आपको डायग्राम्स वगैरह दिखाऊंगा. So that bit is the cerebellum. ये जो गोल मटोल सा स्टफ है. और अगर इसके एंटीरियर स्ट्रक्चर्स देखें तो there is a cavity of the fourth ventricle and then the whole brain stem जिसमें pons है, mid brain है and medulla oblongata. इसको याद है? This is a separate video that we have done. The brain stem. So brain stem, this is the whole brain stem and the fourth ventricle. They are present anterior to the cerebellum. या ये कह सकते हैं कि brain stem और fourth ventricle के posterior होता है cerebellum. So that's the location. Now cerebellum is somewhat ovoid in shape and constricted in its median part. It consists of two cerebellar hemispheres. जैसे cerebral hemisphere दो थे, बिल्कुल इसी तरह cerebellar hemispheres भी दो हैं. And in the middle they are joined by the vermis. So if you look at this diagram, that is the vermis area. So that is one cerebral hemisphere, that is the other cerebral hemisphere, and this is the vermis area, okay, in the middle, which connects the two cerebellar hemispheres. The cerebellum is connected to the posterior aspect of the brainstem by three band-like bundles of nerve fibers. These are known as superior, middle and inferior cerebellar peduncle. अब ये जो cerebellum है, मैंने आपसे बताया कि it is situated posterior to the brainstem. It is also very well connected with the brainstem. So there are three connections like superior, middle, inferior. इनके बारे में पढ़ेंगे, the cerebellar peduncles. So इस वक्त इतना याद रख लें और पार्क कर लें कि cerebellum is connected with the brainstem. ठीक है? By these three structures: superior, middle, inferior cerebellar peduncles. Now the cerebellum is divided into three main lobes. There is an anterior lobe, there is a middle lobe, and then there is a flocculonodular lobe. जो anterior lobe है, अच्छा हर lobe अब different angle से दिखता है because imagine three dimensional structure में surrounded structure. So कोई part superior view से दिखेगा, कोई inferior view से दिखेगा, कोई posterior view से दिखेगा. So जो anterior lobe है, it may be seen on the superior surface of the cerebellum and is separated from the middle lobe by a V-shaped fissure which is called the primary fissure. अब हर part हमको समझना है. So if you look at this diagram, this is the superior surface that we are looking at, and here you see there is a primary fissure. So that fissure, it separates out. इसके आगे जितना कुछ है, that is the anterior lobe. So all this is the anterior lobe. It is visible on the superior surface and it is separated by the rest of the cerebellum by the primary fissure. ठीक है? और इस प्राइमरी फिशर के पीछे, इसके आगे यानी इसके anteriorly there is an anterior lobe, but behind the primary fissure is the middle lobe which is also called the posterior lobe. So anterior lobe and posterior lobe. अब posterior lobe का नाम middle lobe भी है. So the middle lobe, also sometimes called the posterior lobe, which is the largest part of the cerebellum, is situated between the primary fissure and the ovulonodular fissure. यानी अब अगर एक और different diagram देखें, this diagram, so this is another view of cerebellum. So try to locate where is the primary fissure. So that's the primary fissure, and anything ahead of the primary fissure is the anterior lobe. Things behind the primary fissure, this is all the middle lobe, and then there is another fissure which is called ovulonodular fissure. It separates the middle lobe from the posterior lobe, this part which is known as flocculonodular lobe. So basically there are three lobes और दो fissure आपने याद रखने हैं. One is the primary fissure, other one is the ovulonodular fissure. Primary fissure के आगे anterior lobe, प्राइमरी फिशर और ओवुलोनोडुलर फिशर के बीच में मिडिल लोब, ओवुलोनोडुलर फिशर के पीछे इसके पोस्टीरियर इज द फ्लोकोनोडुलर लोब. ठीक है? तो ये तीनों लोब्स आपको लोकेशंस पता चल गई. द फ्लोकोनोडुलर लोब इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द ओवुलोनोडुलर फिशर. ये बात मैंने आपको डायग्राम पे दिखा दी है. अ डीप हॉरिजॉन्टल फिशर दैट इज फाउंड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द cerebellum separates the superior from the inferior surface, but it has no morphological functional significance.
insignificant, so that's why it's not something very important. Okay, so that horizontal fissure is just there, just lying there doing nothing kind of thing. मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं होगा, ये ऐसा है कि इसका काम अभी तक हमें पता नहीं चला. In future maybe we know something about it, but anyways, here is the horizontal fissure. It's just a straight line, horizontal fissure. Okay, now let's talk about some structural anatomy के कौन सी layers होती हैं cerebellum में. The cerebellum is composed of an outer covering of gray matter which is known as the cortex. So ये organization is same as the cerebrum. If you remember, cerebrum में भी ऐसे ही था कि there was an outer cortex and inner white matter, और white matter में there were embedded nuclei, उनको हम कहते हैं intracerebellar nuclei. There are 4 nuclei जो भी हम डिस्कस करेंगे. So cerebellar cortex. So organization इस तरह से है कि if you look at the diagram, ये diagram अगर देखें, ये section आपके सामने नजर आ रहा है. So there is an outer layer. This outer layer is known as cerebellar cortex. ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है, this is all the white matter, और white matter के अंदर embedded हैं intracerebellar nuclei. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्टेक्स. फिर थोड़ा व्हाइट मैटर पे बात करेंगे. जो कॉर्टेक्स है सेरिबेलम का, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ लार्ज शीट विद फोल्ड्स लाइंग इन द कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन. ईच फोल्ड और फोलियम. आपको याद है जब मैं सेरिब्रम करा रहा था तो वहां हमने गायराए और सल्काए ये 2 टर्म्स डिस्कस किए थे. तो जिस तरह वहां बताया था ना कि सल्काए फिशर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो फोल्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड फोलियम. दे कंटेन्स अ कोर ऑफ व्हाइट मैटर कवर्ड सुपरफिशियली बाय द ग्रे मैटर. सो again, if we go back to figure 6.1 and try to figure out what they're talking about, so if you look at this diagram, these are the folds, these are the folia, these are the folium. You see, these are the folium. ये folds आपको दिख रहे हैं इस तरह से. So इसके core में white matter होगा, लेकिन surrounding में periphery में gray matter होगा, और उस gray matter को हम cortex कहते हैं, cerebellar cortex. A section made through the cerebellum parallel with the median plane divides the folia at right angles, and the cut surface has branched appearance which is known as arbor vitae. अगर आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम को, so you can appreciate कि if we look at the cross section, and this is the cross section, so if you look at the cross section of the cerebellum, you see this branching pattern, tree की तरह का branching pattern है. You see this? ये देखें, इस तरह से tree भी ऐसे ही branch करते हैं यार. So tree की तरह ये branching pattern है. This pattern of cerebellar arrangement of cortex and white matter is known as arbor vitae. The gray matter of cortex throughout its extent has a uniform structure, and it is usually divided into 3 layers, and those 3 layers are known as the outer layer, which is known as the molecular layer. Then there is a middle layer which is known as the Purkinje layer, and then there is the inner layer which is known as the granular layer. So MPG, molecular layer, Purkinje layer, granular layer. These are the 3 layers of cerebellum. एक एक करके अब इन तीनों लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. हर लेयर में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होगा जो आपको लाजमी याद रखना एग्जाम्स के लिए. So the first layer, which is called the molecular layer, it contains 2 types of neurons, yeah, 2 types of cells. One are known as stellate cells, and the other one are known as the basket cells. Usually outer periphery में there is, so if you look at this diagram, so this is the cortex, all this is the cerebral cortex, this is the gray matter, and all this is the white matter. ठीक है, अब जो ग्रे मैटर है उसकी फर्दर ऑर्गेनाइजेशन 3 लेयर्स में है. ये डॉटेड लाइन से सेपरेट हुई है. सो डॉटेड लाइन से लेके सरफेस तक ये जो लेयर है, दिस इज ऑल नोन एज द मॉलिक्यूलर लेयर. और इस मॉलिक्यूलर लेयर में जो ग्रीन सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर स्टिलेट सेल्स, और फिर ये जो इनर साइड पे ब्लू सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द बास्केट सेल्स. सो मॉलिक्यूलर लेयर में लेयर नंबर 1 है, और इसमें 2 तरह के सेल्स हैं. ओके, नाउ दीज न्यूरॉन्स आर स्कैटर्ड अमंग डेंड्राइटिक आर्बोराइजेशन एंड न्यूमरस थिन एक्सॉन्स दैट रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस of the folia. Neuroglial cells are also found. So these cells are scattered throughout the molecular layer, and these are not the only cells. Obviously there are supporting cells which are called neuroglia. पूरे CNS का यही organization है कि there are some neurons and then there are some supporting cells. So ये थी पहली layer जिसमें 2 तरह के cells हैं. Now layer number 2, which is known as the Purkinje layer. The Purkinje cells are large Golgi type 1 neurons. So number 1, they are large neurons, okay? They are flask shaped and they are arranged in a single layer. In a plane transverse to the folium, the dendrites of these cells are seen to pass into molecular layer. So ये है Purkinje layer, second layer है, लेकिन ये molecular layer में superficial to this
पुरकंजी लेयर, उसमें इनके डेंड्राइट्स जाते हैं न्यूरॉन्स के, एंड दे अंडरगो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस आर स्मूथ एंड सब्सिक्वेंट ब्रांचेस आर कवर्ड बाय शॉर्ट thick dendritic spines. It has been shown that spines form synaptic contacts with parallel fibers derived from the granule cells in the axon. So if you look here, this number 2 layer between this black line and this black line, these orange cells, these are all under the domain of the Purkinje cell layer. और इस Purkinje cell layer में obviously इसका नाम Purkinje cell layer है, तो जो cells होंगे उनका नाम क्या होगा? Purkinje fibers. Now try to look at this. ये Purkinje फाइबर की सेल बॉडी है और इसकी जो डेंड्राइट्स हैं किस तरह हेवीली ब्रांच हो रहे हैं इन द मॉलिक्यूलर लेयर, एंड देन द एक्सॉन इज गोइंग थ्रू द थर्ड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड थ्रू द व्हाइट मैटर एंड देन गोइंग टू द न्यूक्लियस. सो ये देख रहे हैं किस तरह से वेल कनेक्टेड. अगर मैं कहूं कि ऊपर यानी कॉर्टेक्स में ये कनेक्टेड है मॉलिक्यूलर लेयर के साथ और नीचे इसका एक्सॉन जा रहा है टू द सेरिबेलर न्यूक्लियाई, है ना, वेरी वेल कनेक्टेड. एट द बेस ऑफ द पुरकिंजे सेल the axon arises and passes through the granular layer to enter the white matter, and upon entering the white matter it goes all the way to the cerebellar nuclei. ये जो मैंने बात आपको यहाँ पे समझाई, ठीक है. So collateral branches from the Purkinje axon make synaptic contacts, और ये they make synaptic contact. इतनी ज़्यादा branches जिसकी होंगी obviously वो काफ़ी सारे synaptic contacts बनाएगा with the basket cell, with the stellate cells, with the granular layer. A few Purkinje cell also इनके axon pass directly to end in the vestibular nuclei of the brain stem. Oh my God! So this means कि इतना बड़ा axon है कि cerebellum को पूरा क्रॉस करके brain stem तक पहुँच गया और वहाँ जाके synapses बनाएगा, है ना. मज़ेदार layer है Purkinje layer. Now the third layer, which is known as the granular layer, it is packed with small cells with densely staining nuclei and scanty cytoplasm. Each cell gives rise to 4 or 5 dendrites, which make claw-like endings and have synaptic contacts with mossy fiber input. The axon of each granule cell passes into the molecular layer, where it bifurcates at a T-junction, the branches running parallel to the long axis of the cerebellar folium. These fibers are known as the parallel fibers. अब जरा इस बात को देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं. Now we are talking about the third layer, which is between this dotted line and this dotted line. This is layer number 3, और इसको हम granular layer कहते हैं. तो ये देखें, ये पड़ा हुआ है इसकी सेल बॉडी, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, लेकिन इसके एक्सॉन कितने ब्रांच्ड हैं और they are going way up to the molecular layer. So molecular layer तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है. अगर मैं इस तरह भी समझाऊं आपको ये बात कि ये जो सेल्स हैं, these cells which are called the जो granular layer के सेल्स हैं, ये उल्टे पड़े हुए हैं. So you look here, ये अपना एक्सॉन ऊपर भेज रहा है and then it is bifurcating into a T structure which is running parallel. So look here, this is the granular cell, और ये जो granular cell है ये मैंने आपको एक्चुअली Golgi cell बता दिया था. So that is don't look at this particular cell, that's the Golgi cell, but we are now looking at the granular cell. So the granular cell is present like उल्टा, ये उसका एक्सॉन निकल के T shape में डिवाइड हो रहा है into the molecular layer, and then it is making synaptic contacts with a lot of different cell types. Okay, right. Now these fibers, ये हो गया parallel fibers. So ये वाले जो T division के बाद जो दो parallel fibers निकले हैं from the axon of the granular cell, these are called the parallel fibers. Right? Simple चीज है. Most of the parallel fibers make synaptic contact with the spinous processes of the dendrites of the Purkinje cells. So they synapse with each other. Neuroglial cells are also found throughout the layer because they are the supporting layer, supporting cells. और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि neuronal cells के साथ साथ there are also supporting cells available. ठीक है? Now let us talk about what are the different functional areas of cerebellum. Now, clinical observations by neurologists and neurosurgeons and experimental use of PET, which is positron emission tomography, have shown that cerebellar cortex can be divided into 3 functional areas. Cortex of the vermis, so this is the first functional area, cortex of the vermis, which is in the midline, and it is the area which influences the movements of long axis of the body, which means neck, shoulder, thorax,
abdomen and hips, so everything which is present in the long axis. Immediately lateral to the vermis is a so-called intermediate zone of cerebellar hemispheres. अब ये जो intermediate zone है, this is then part number 2. This area has been shown to control the muscles of distal parts of the limbs, especially the hands and the feet. The lateral zone of each cerebellar hemisphere appear to be concerned with planning of sequential movement. यानी जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अब ये अपना हाथ उठाना है, ये चीज उठानी, so that's a coordinated sequential movement, उसकी प्लानिंग में. सो इस डायग्राम पे बड़ा अच्छे से बताया हुआ है. दैट इज द सेंट्रल वर्मिस एरिया ना. तो ये जो वर्मिस का एरिया है, इसमें मिड लाइन स्ट्रक्चर्स है. देखिए नेक के स्ट्रक्चर हैं, थॉरेक्स, एब्डोमेन, शोल्डर जॉइंट, pelvic joint. So anything which is present in the center is the movement which is controlled by the vermis area. So this is area number 1, functional area. Then immediately lateral to the vermis is area number 2 on both the sides, which is associated with movements, particularly of movements of hand and movement of feet. इसीलिए यहाँ पे hand और feet बड़ा करके बनाया हुआ है, ठीक है. And then इसके lateral ये third area है, this area. This is the area which is the lateral most area, and this is associated with coordinated movement. So ये 3 functional areas हैं जो आपको पता होने चाहिए. Then we have to talk about what are the intracerebellar nuclei. देखिए इसका concept ये है कि general organization मैंने आपको बताई. cerebellum का अगर section करें तो बाहर you will see the cortex, और cortex के अंदर you will see the white matter. White matter के अंदर there are cell bodies of neurons embedded like this. These cell bodies are termed as nuclei. So there are 4 nuclei in cerebellum, and these nuclei are known as dentate nucleus, emboliform nucleus, globose nucleus, and vestigial nucleus. So if you look at the diagram here, all 4 of these can be appreciated on this diagram here. So you see the lateral most is the dentate nucleus, it's the biggest one. Then there is emboliform nucleus, then there is globose nucleus, and then in the middle, close to the midline, is the vestigial. And every nucleus is in a pair. So the dentate nucleus, for example, is present on the right side as well as on the left side. So that's the dentate nucleus. Okay, emboliform nucleus, globose nucleus, right side पे भी होगा, left side पे भी होगा, and then the vestigial also on both sides. Dentate nucleus is the largest of all the cerebellar nuclei. You can also appreciate this in the diagram. So if you look here, this is the dentate nucleus, the largest one of all the 4 nuclei. It is the shape of a crumbled bag with the opening facing medially. You see, that's the opening which is facing medial side per. The interior of the bag is filled with white matter made up of efferent fibers that leaves the nucleus through the opening to form the large part of the superior cerebellar peduncle. So that's an important thing. ये देखो अरेंजमेंट क्या है, जो न्यूक्लियाई हैं, मैं कह रहा हूँ these are the cell bodies. So बहुत सारी cell bodies अगर एक जगह जमा हो जाती हैं न्यूरॉन्स की, so they kind of make, this is the now known as the nucleus. अब ये cell bodies अकेली तो नहीं होंगी ना, इनके एक्सॉन भी तो निकलेंगे ना. सो ये जो एक्सॉन्स निकलेंगे, ये एक्सॉन्स बनाते हैं व्हाइट मैटर, और वो व्हाइट मैटर यहाँ पर है. सो यहाँ फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होगा, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे सेल बॉडीज हैं, दीज आर द सेल बॉडीज, इनके एक्सॉन्स निकल रहे हैं और इनके एक्सॉन्स मिलके ये व्हाइट मैटर बनाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे ऑल कंबाइन टू मेक द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. सो इनमें इफरेंट फाइबर्स हैं, यहाँ से मैसेज जा रहा है वाया द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल टू द ब्रेन स्टेम, क्योंकि जो सेरिबेलर पेडंकल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं विद द ब्रेन स्टेम. ठीक है. फिर जो एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस है, इट इज ओवॉइड एंड इज सिचुएटेड मीडियल टू द डेंटेट न्यूक्लियस. यू कैन have a look at the diagram here, emboliform nucleus. And then there's a globose nucleus, consists of one or more rounded cell groups which is still medial to the emboliform. These are the globose. So lateral से medial जा रहे हैं, तो सबसे पहले dentate, then emboliform, then globose, and the last one is the vestigial, which is near the midline in the vermis and close to the roof of the fourth ventricle. So if you see, this is the fourth ventricle, roof of the fourth ventricle would be this, and here is the vestigial nucleus. The intracerebellar nuclei are composed of large multipolar neurons with simple branching dendrites. The axons from the cerebellar outflow in the superior and the inferior cerebellar peduncle. बात समझ में आ गई? जो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया था ना, कि जितने न्यूक्लियाई हैं इन सब में होंगी सेल बॉडीज, और ये जो सेल बॉडीज हैं उनसे जब एक्सॉन्स निकलेंगे इन सब के, सो दे विल बी कनेक्टेड. इनमें एक तो ये कि इफरेंट फाइबर हैं, ये मैसेज लेके जा रहे हैं. नंबर 2, दे विल बी कनेक्टेड विद द ब्रेन स्टेम बाय आइदर विद द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और विद द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ठीक है. अब व्हाइट मैटर की थोड़ी बात करें. ये तो अब तक जो हम बात कर रहे थे कॉर्टेक्स की हमने बात की, उसमें डिफरेंट न्यूरॉन टाइप्स की बात की, फिर न्यूक्लियाई की
बात की, तो ये सारा जो है इट्स ऑल अबाउट द सेल बॉडीज इन द ग्रे मैटर. Now let's talk about what is the white matter in the cerebellum. There is a small amount of white matter in the vermis. It closely resembles the trunk and branches of a tree. ये मैंने आपको concept already बता दिया है arbor vitae का. The white matter is made up of three groups of fibers. There are intrinsic fibers, there are afferent fibers, there are efferent fibers. देखिए simple बात है. White matter is basically made up of axons. So neurons के जो axons हैं, जो for example अगर ये cell body है तो ये लंबा सा axon होगा. ये दूसरे neuron की cell body है तो ये उसका एक्सॉन. सो ये जो एक्सॉन्स हैं सारे मिलके बना देते हैं नर्व फाइबर्स या व्हाइट मैटर. अब सेरिबेलम में तीन तरह के व्हाइट मैटर हैं. इंट्रिंसिक व्हाइट मैटर या इंट्रिंसिक एक्सॉनल फाइबर्स वो हैं हु नेवर लीव द सेरिबेलम. सो ये सेरिबेलम ही के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, एक इंट्रिंसिक फाइबर ऐसे होगा कि एक पार्ट से निकला दूसरे पार्ट पे खत्म हो गया, एक पार्ट से निकला दूसरे, इट नेवर लीव्स द सेरिबेलम. लेकिन जो इफरेंट फाइबर है वो ऐसे होगा कि इस न्यूक्लियस से फॉर एग्जांपल उसका फाइबर निकला और फिर निकल के ब्रेन स्टेम तक चला गया. सो बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द सेरिबेलम फ्रॉम द सेरिबेलम टू द आउटसाइड, दिस इज नोन एज इफरेंट फाइबर. और फिर एक कैटेगरी ये होगी जो बाहर से यानी सेरिबेलम के बाहर से फाइबर आएंगे एक्सॉन्स और वो आके साइनैप्स करेंगे विद इन द सेरिबेलम. सो बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम outside और उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेरिबेलम है, these are known as afferent fibers. तो ये तीन तरह के फाइबर्स हैं व्हाइट मैटर में. इंट्रिंसिक फाइबर्स, they never leave the cerebellum. Afferent fibers, they form the greater part of the white matter and they proceed to the cerebellar cortex. And then there are efferent fibers, they leave the cerebellum to some other parts, okay, usually without synapsing. Now fibers from dentate, emboliform and globose nuclei leave the cerebellum through the superior cerebellar peduncle. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. Now fibers from the fastigial nucleus goes through the inferior cerebellar peduncle. It's an important point. एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इसको, ठीक है. तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर समझ में आ गई तो अब हम जरा बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट cerebellar cortical mechanisms, किस तरह फाइबर्स आते हैं और थोड़ी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं फंक्शनल एनाटॉमी. As a result of extensive cytologic and physiologic research, certain basic mechanisms attributed to cerebellar cortex have now been, they have been classified. There are some specific types of fibers and they are named and labeled as climbing fibers and mossy fibers. They constitute the two main lines of input to the cortex and they are excitatory to the Purkinje cell. यानी ये जो fibers हैं mossy fibers और climbing fibers, ये ultimately Purkinje cells को जाकर के they will excite the Purkinje cells. So that's their job. अब ये दो fibers इनके बारे में थोड़ी सी details पढ़ लेते हैं कि what are climbing fibers. They are terminal fibers of the olivocerebellar tract. ये tract हमने already पढ़ रखा है when we have been discussing different ascending descending tracks, so you should be familiar with the terminology. If not, आप मेरी वीडियोस देखिए NeuroAnatomy की जो मैंने पहले अपलोड कर रखी हैं. Olivocerebellar tract के terminal fibers क्या बनाते हैं? Climbing fibers. They are so named because they ascend through the layers of the cortex like a vine on the tree. यानी बाकायदा असेंड करते हैं all the way through the cerebellum. They pass through the granular layer of the cortex and terminate in the molecular layer by dividing rapidly. Each climbing fiber wraps around and makes a large number of synaptic contacts with dendrites of the Purkinje cell and they actually excite the Purkinje cell. A single Purkinje neuron makes synaptic contact with only one climbing fiber. However, one climbing fiber makes contact with 1 to 10 Purkinje neurons. A few side branches have also been reported. Now basically हो क्या रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो climbing fibers है ये आ कहाँ से रहे हैं. So they are coming from olivocerebellar tract. Okay, यहाँ से अगर मैं इस diagram में आपको ये दिखाऊं, so these are the climbing fibers which are coming from the cerebellar nucleus की तरफ, not coming from, they are giving an input to the cerebellar nucleus as well, which we will discuss in a minute. But these are the climbing fibers. You see, they are moving up and up and up all the way through the white matter, then the granular layer, then going all the way through the Purkinje layer, and also they send fibers to the topmost layer, which is the molecular layer. So ये climbing fibers हैं, okay? The fibers coming from the olivocerebellar tract and traveling all the way up to the different layers of cortex in the cerebellum. फिर सेकंड कैटेगरी है mossy fibers की. ये कहाँ से आते हैं? These are the terminal fibers of all other cerebellar afferent tracts. यानी जितने भी cerebellar afferent बाहर से fibers आ रहे हैं उन सब के terminal
fibers कहलाते हैं mosby fibers. They have multiple branches and exert a much more diffuse excitatory effect. A single mosby fiber may stimulate thousands of Purkinje cells. Although these climbing fibers are a bit more specific, they इनका जो synaptic number है वो कम है, but mosby fiber का thousands में है. When what then is the function of the remaining cells of the cerebellar cortex, namely the stellate cell, basket cell, Golgi cells? Because हम बार बार बात कर रहे हैं कि सिर्फ Purkinje cells जो हैं ये excite होते हैं, तो बाकी लोग यहाँ क्या तमाशा देखने के लिए बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. Neurophysiologic research using microelectrode would indicate that they serve as inhibitory interneurons. So इनका basic काम होता है inhibitory function. Purkinjes are more sort of excitatory function. They not only limit the area of cortex excited, but also probably influence the degree of Purkinje cell excitation. So in the body that's a general phenomena कि अगर कोई एक cell excite हो रहा है तो उसको inhibit करने के लिए there are some cells ताकि जो excitation है वो control में रखी जा सके. By this means the fluctuating inhibitory impulses are transmitted by the Purkinje cells to the intracerebellar nuclei, which in turn modify the muscular activity and the tone via different areas of the brainstem and cerebral cortex. Thus the Purkinje cells form the center of functional unit of the cerebellar cortex. अगर ये excite होंगे जैसे कि by the mossy fibers and the climbing fibers तो एक different output होगा, और अगर Purkinje cells inhibit होंगे तो एक different output होगा, और output है obviously movement, control, coordination of the body. ठीक, तो ये आपको दो फाइबर्स लाजमी पता होने चाहिए रिगार्डिंग द कंट्रोल मैकेनिक्स ऑफ cerebellum. Now you should also be aware of this term intracerebellar nuclear mechanisms. Now ये जो nuclei मैंने आपको इस डायग्राम में यहाँ बताए थे जो cerebellum में होते हैं, these four pairs of nuclei on right as well as on the left side, इनमें फाइबर्स कहाँ से आते हैं और फिर इनके फाइबर्स कहाँ जाते हैं, दैट्स द स्टोरी. अब ऑब्वियसली जो फाइबर्स मुख्तलिफ जगहों से यहाँ न्यूक्लियाई में आके साइनेप्स करेंगे, इन फाइबर्स को हम नाम देंगे आफ्रेंट फाइबर्स, और जो फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे और कहीं और जाएंगे, दीज विल बी नोन एज इफरेंट फाइबर्स. ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि न्यूक्लियाई में क्या कहानी है. द डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई विच आर 4 in number, दे रिसीव afferent nervous information from 2 major sources. पहली सोर्स क्या है? द inhibitory axons from the Purkinje cells, which is in the cerebellar cortex, and the excitatory axon that are branches of afferent climbing and mossy fibers that are passing to the overlying cortex. यानी ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी. सो दैट्स अ सेरिबेलर न्यूक्लियस, और ये क्लाइंबिंग फाइबर है. तो क्लाइंबिंग फाइबर आकर के यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा, साइनैप्स करेगा और वो उसको एक्साइट करेगा. सो इट विल बी एक्साइटेटरी साइनैप्स टू द सेरिबेलर न्यूक्लियस बाय द क्लाइंबिंग फाइबर, एंड सेम हैपेंस विद द मॉसी फाइबर एज वेल. सो मॉसी फाइबर भी आप देखें मुख्तलिफ सेल्स में, कॉर्टेक्स की लेयर्स में डिफरेंट सेल्स के साथ साइनैप्स करते हैं. दे ऑल्सो सेंड ब्रांचेस टूवर्ड्स द सेरिबेलर न्यूक्लियाई. इन दिस मैनर a given sensory input to the cerebellum sends excitatory information to the nuclei, which a short time later receives cortical processed inhibitory information by the Purkinje cell. So the Purkinje cells, ये जो Purkinje cells हैं, they are sending their axonal process to the nucleus, और इसका काम inhibitory है. That is inhibitory to the function of the nucleus, and climbing and mossy fibers, they are excitatory to the nucleus. So that's the general norm that you have to remember about the cerebellar nuclei. Now the neurotransmitter, ये जो cerebellar cortex में neurotransmitter है वो कौन सा है? Pharmacological research has suggested that excitatory climbing and mossy fibers use glutamate as their excitatory neurotransmitter. Further research has indicated that other afferent fibers entering the cerebellar cortex also produce norepinephrine and serotonin at their nerve endings, and they modify the action of glutamate on Purkinje cells. So basically glutamate is the primary one, and then also some amounts of norepinephrine and serotonin. Now cerebellar peduncles मैं आपको already बता चुका हूँ कि these are the connections between the cerebellum and the brainstem. So cerebellum is connected to the brainstem by these 3 peduncle. The upper one is known as the superior cerebellar peduncle, then there is a middle cerebellar peduncle, then there is inferior cerebellar peduncle. Okay, now
the cerebellum is linked to other parts of the central nervous system, particularly the brainstem, by these bands which are called peduncles. The superior cerebellar peduncle connects the cerebellum to the midbrain. That's very important information. The middle cerebellar peduncle connects the cerebellum to the pons, and the inferior cerebellar peduncle connects the cerebellum to the medulla oblongata. So superior with the midbrain, middle with the pons, and inferior with the medulla oblongata. Very very important classified information. अच्छा जी, अब सेरिबेलर अफरेंट फाइबर, जब कभी ये वर्ड आपके सामने आए सेरिबेलर अफरेंट फाइबर्स, जिसका मतलब ये है कि जो भी फाइबर्स सेरिबेलम की तरफ आ रहे हैं, जो असेंडिंग ट्रैक्स आएंगे ऑब्वियसली, सो these are called cerebellar afferent fibers. The cerebellum receives major afferent tracts from the cerebral cortex, from the pons, from the medulla, and from the spinal cord. So if you try and imagine the location of the cerebellum, this is cerebellum. इस cerebellum में इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी आ रही है, ऊपर यहाँ सेरिब्रम होंगे, ये भी ऑर्डर्स पास ऑन कर रहे हैं, इसके अलावा पॉन्स से इंफॉर्मेशन एंटर होगी, मिड ब्रेन. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो भी फाइबर्स सेरिबेलम की तरफ लेके आ रहे हैं, दीज आर ऑल नोन एज अफरेंट फाइबर्स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सेरिबेलम में बहुत सारे फाइबर्स आ रहे हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम, फ्रॉम पॉन्स, फ्रॉम मेडुला, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. सेरिबेलर अफरेंट फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कॉर्टेक्स से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेंड इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम बाय 3 pathways. The first one is called cortico-pontocerebellar pathway. Then there is a cerebro-olivocerebellar pathway. Then there is a cerebro-reticulocerebellar. ये नाम बड़े फैंसी और मुश्किल से लग रहे हैं, बट अभी इनकी डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये एक्चुअली इतने मुश्किल है नहीं. सो बट आई मीन ऑब्वियसली लंबे कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं. cortico-pontocerebellar pathway फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन द corticopontine fibers. इसमें देखें कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पॉन्टो है, ये पॉन्स इन्वॉल्व है, और अल्टीमेटली क्या चीज होगी, सेरिबेलर. सो बेसिकली तीनों पाथवेज को अगर मैं आपको इजी करके और डायसेक्ट आउट करके बताऊं ना, तो याद रखने का आसान तरीका ये है कि जहां से पाथवे स्टार्ट हो रहा है वो देखिए नाम स्टार्ट में है, कॉर्टिको कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, पॉन्स में जा रहा है, सेरिबेलम में एंड हो रहा है. तो ये सेकंड पाथवे भी सेरिबेलर, सेरिबेलर, इनका तीनों का मतलब ये है कि तीनों अफरेंट फाइबर्स जो हैं वो सेरिबेलम में एंटर होंगे. ठीक है, और अगर वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो सेरिब्रो रेटिकुलो, ओलिवरी सिस्टम से गुजर रहे हैं तो सेरिब्रो ओलिवरी, पॉन से गुजर रहे हैं तो कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर. द कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर अराइजेस फ्रॉम द नर्व सेल्स इन द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड द ऑक्सिपिटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सो कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है मामला, एंड दे डिसेंड थ्रू द कोरोना रेडिएटर and the internal capsule and terminate on the pontine nuclei. So cortico इसलिए क्योंकि cortex से start हुआ है, pontine इसलिए क्योंकि pontine एरिया में सिनेप्स हुआ है, pontine nuclei में. और इस डायग्राम को अगर मैं देखूं, so let me tell you कि ये क्या इसमें मामला चल रहा है. So let me identify the right pathway. We are studying the cortico-pontocerebellar pathway, which is this one. So the fibers are arising from the cerebral cortex going down, and they will go down up till the levels of pons, और pons से फिर fibers opposite side के cerebellar cortex तक जा रहे हैं. So from the pons, the pontine nuclei, they give rise to transverse fiber. So this is the transverse fiber. They give rise to transverse fiber of the pons, which crosses the midline and enter the opposite cerebellar हेमिस्फीयर एज द मिडल सेरिबेलर पेडंकल. तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया पाथवे. आसान है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है कि द फाइबर्स आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स गोइंग ऑल द वे डाउन टू द पोंटाइन न्यूक्लियाई, देन दे आर गोइंग टू द सेरिबेलर कॉर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स के जरिए, और ये फाइबर्स जाते हैं थ्रू द मिडल सेरिब्रल पेडंकल. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में जो पेडंकल है, ये वाला पेडंकल, दिस इज कॉल्ड द मिडल सेरिब्रल पेडंकल. दिस इज द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, एंड दिस इज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ठीक है, राइट, ओके. नाउ द नेक्स्ट पाथवे विच इज फ्रॉम द हायर सेंटर्स टू द सेरिबेलम इज कॉल्ड द सेरिब्रो olivocerebellar pathway. The cortico-olivary pathway arises from the nerve cells in the frontal, parietal, temporal, occipital lobes of the cerebral cortex and descend through the corona radiata and the internal capsule to terminate bilaterally on the inferior olivary nucleus.
चूंकि ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में स्टे कर रहा है इसीलिए ऑलिवो नाम यहाँ पे आया है. द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस गिव राइज टू द फाइबर्स दैट क्रॉस द मिड लाइन एंड एंटर द ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. दीज फाइबर्स टर्मिनेट एज द क्लाइंबिंग फाइबर्स. अब ये डायग्राम में यहाँ देख लें. सो वी हैव दीज 3 सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट दी cortico-olivary cerebellar pathway, which is this one. So इसका भी cell body cortex में है, cerebral cortex में. Then the axons go down through the corona radiata. It is going down and down and down into the inferior olivary nucleus. यहाँ तक आया ये देखें, into the inferior olivary nucleus. यहाँ synapse हुआ और फिर inferior olivary nucleus के fibers opposite side पे cross किए inferior cerebellar peduncle से होते हुए into the cerebellar cortex. So ये pathway है. And then the next pathway is the cerebro-reticular cerebellar pathway. The cortico-reticular fibers arise from the nerve cells of the many areas of the cerebral cortex, particularly in the sensory motor area. They descend to terminate in the reticular formation of the same side and on the opposite side in the pons and medulla. The cells in the reticular formation give rise to reticulocerebellar fiber that enter the cerebellar hemisphere on the same side through the inferior as well as the middle cerebellar peduncle. So if you look at the diagram now, this one is the cortico-reticular pathway. Again, the cell body in the cerebral cortex, the fibers going down, 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 and the fibers are coming in the reticular formation, and from the reticular formation, from the middle as well as the inferior cerebellar peduncle, they enter the cerebellum. This connection between the cerebrum and the cerebellum is important in control of voluntary movements. Information regarding the initiation of movement in the cerebral cortex is probably transmitted to the cerebellum so that the movement can be monitored and appropriate adjustments can be made. Basically जो cerebral cortex है वो cerebellum तक information भेज रहा है by these pathways. और ये जो 3 pathways हैं ये बेसिकली शो करते हैं कि जो हायर सेंटर्स ऑफ एक्टिविटी हैं यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो सेरिबेलम को ऑर्डर्स दे रहा है, मैसेजेस दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है. ठीक है, तो ये तो वो मैसेजेस थे जो सेरिबेलम को मिलते हैं बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जो सेरिबेलम तक आते हैं बाय द स्पाइनल कॉर्ड. वो क्या क्या है? So the spinal cord sends information to cerebellum from some somatosensory receptors by 3 different pathways. और वो pathways क्या हैं? ये pathways हमने already ascending tracks पढ़े हुए हैं. The anterior spinocerebellar tract, the posterior spinocerebellar tract and the cuneo-cerebellar tract. ये सब हमने, अगर आप मेरी ascending tract की वीडियो देखेंगे तो उसमें ये आपको ऑलरेडी बात हमने डिस्कस की हुई है. So the first one, anterior spinocerebellar pathway. Anterior because of its location, spino क्योंकि spinal cord से आ रहा है, cerebellar क्योंकि cerebellum तक जा रहा है. The axons entering the spinal cord from the posterior root ganglion terminates by synapses with the neurons in the nucleus dorsalis. Most axons of these neurons cross to the opposite side and ascend in the anterior spinocerebellar tract in the contralateral opposite side का white column में. ठीक है, the fibers enter the cerebellum through the superior cerebellar peduncle and terminate as mossy fibers in the cerebellar the cortex. So यहाँ पे ये diagram नजर आ रही है. So these are the fibers which are coming to the dorsal root ganglion और फिर they are crossing over to the opposite side, and by crossing over to the opposite side they then ascend in the spinal cord. और spinal cord में ये ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं ब्रेन स्टेम तक पहुंचे, सो ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से निकल के they enter into the cerebellum और यहाँ they continue as the mossy fibers. तो ये रूट पता होना चाहिए, फाइबर आ कहाँ से रहा है और किस सेरिबेलर पेडंकल से गुजर रहा है और अल्टीमेटली उसका एंड फेट क्या है. वो सेरिबेलम में साइनेप्स कर रहा है या कंटिन्यू कर रहा है एज मॉसी फाइबर, या अगर मॉसी फाइबर या क्लैम्बिंग फाइबर के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है तब भी वो आगे जाके कहीं ना कहीं साइनेप्स करेगा. ठीक है, नाउ दोस फाइबर्स दैट क्रॉस ओवर टू द ऑपोजिट साइड, लेट मी चेक इफ वी आर ऑन द राइट ट्रैक. यस, सो दोस फाइबर्स दैट क्रॉस ओवर टू द ऑपोजिट साइड इन द स्पाइनल कॉर्ड आर थॉट टू क्रॉस बैक विद इन द सेरिबेलम. सो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है जब हमने एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक डिस्कस किया था. ठीक है,
is found all segments of the spinal cord, and ठीक है, ये हमने करी हुई है बात. Cerebellum likely receives information from the skin and superficial fascia by this particular tract. दूसरा tract जो है जिसके जरिए information cerebellum तक आती है वो है posterior spinocerebellar tract. The axons entering the spinal cord from the posterior root ganglion enter the posterior gray column and terminate by synapsing on the neuron at the base of the posterior gray column. These neurons are known collectively as nucleus dorsalis. Nothing new. Ascending track की मेरी वीडियो देखिए. अब the axons of these neurons enter the posterolateral part of the lateral white column on the same side and ascend as the posterior spinocerebellar tract. और ये ultimately inferior cerebellar peduncle से निकलते हुए cerebellar cortex तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके synapse करते हैं. They take information from the muscle spindles, tendon, organ, joint receptors of trunk and lower limb. So this is the posterior cerebellar tract, fibers coming, carrying the information, dorsal root nucleus, fibers ascending, inferior cerebellar peduncle into the cerebellum. So that is the information and pathway for the posterior spinocerebellar tract. The third one is called the cuneo-cerebellar tract, and these fibers originate in the nucleus cuneatus of the medulla oblongata and they enter the cerebellar hemisphere of the same side by the inferior cerebellar pathway, and they bring information again from the muscle spindle, tendon, organ, joint receptors of the upper limb and upper part of the thorax. So these are the cuneo-cerebellar pathway. Now जो cerebellar afferent fibers हैं, they also come from the vestibular nerve. The vestibular nerve receives information from the inner ear, and you know that it concerns the motion from the semicircular canals which maintains the balance of the body, and relative to the gravity सारा control होता है semicircular canals में. The vestibular nerve sends many afferent fibers directly to the cerebellum through the inferior cerebellar peduncle. Other vestibular afferent fibers pass first through the vestibular nuclei in the brainstem, and then they after the relay and synapse the information is sent to the cerebellum. They enter the cerebellum through the inferior cerebellar peduncle. So that's the route of entry from the vestibular input to the cerebellum. All afferent fibers from the inner ear terminate as mossy fiber and flocconodular lobe of the cerebellum. ये terminologies अब आपको पता है. There are some other pathways as well which give input to the cerebellum, but the main ones are these ones which I just told you. Pathway from the cerebral cortex, pathway from the spinal cord, and very important one from the vestibular nerve. So you can also go through this table कि for example cortico-pontocerebellar pathway है तो वो कहाँ, उसका काम क्या है, originate कहाँ से हो रहा है और ultimate उसकी destination क्या है उन fibers की. These are all the afferent incoming fibers to the cerebellum. जिस तरह cerebellum में fibers, अगर ये cerebellum है तो cerebellum में fibers आ रहे हैं messages लेके from the spinal cord, from the cerebral cortex, ऐसे ही cerebellum से fibers जाते भी हैं बाहर message लेके कहीं और, उसे हम कहते हैं efferent fibers. Now the entire output of the cerebellar cortex is through the axons of the Purkinje cell. इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इस वीडियो में आपको बता रहा था कि जो Purkinje cells हैं, these are the primary cells. These are the most important cells. Now most of the axons of the Purkinje cells end by synapsing on the neurons of the deep cerebellar nuclei. The axons of the neurons that form the cerebellar nuclei constitute the efferent outflow from the cerebellum. यानी जो cerebellar nuclei हमने यहाँ देखे थे, where is the relevant diagram जिसमें हमने बात की थी cerebellar nuclei की, let me find that one for you, ये वाली. So इन सब के जो एक्सॉन्स हैं, इन सेल बॉडीज हैं और इनके साथ ज़्यादा एक्सॉन अटैच्ड होंगे, तो इनके जो एक्सॉन्स हैं दे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट द आउट गोइंग फाइबर्स विच आर कॉल्ड द इफरेंट फाइबर्स. ठीक है, अब वो इफरेंट फाइबर्स कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से पाथवेज हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं. अ फ्यू Purkinje cells however pass directly out of the cerebellum to the lateral vestibular nucleus. The efferent fibers from the cerebellum connect with the red nucleus, the thalamus, vestibular complex as well as the reticular formation. So अब थोड़ा देखते हैं इनकी details. Globose emboliform rubral pathways, an important one. Axons of the neurons in the globose and the emboliform nuclei, they travel through the cerebellar peduncle and cross the midline to the opposite side in the decussation of the superior cerebellar peduncles. The fibers end by synapsing with the cells of the contralateral red nucleus. So
ये जो पाथवे है इसमें फाइबर्स फ्रॉम द ग्लोबोज इन द एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई ये निकलते हैं और रेड न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं. सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड सो, ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे, बिकॉज रेड न्यूक्लियस है तो रूब्रल पाथवे. अच्छा जी, विच गिव राइज टू द एक्सॉन्स ऑफ द रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, और फिर वहां से बात निकलती है अगले एक्सॉन की जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है. दैट इज कॉल्ड द रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट. दस दिस पाथवे क्रॉसेस ट्वाइस, वंस in the decussation of the superior cerebellar peduncle and again in the rubrospinal tract. ठीक है, so let me take you to a relevant diagram जिसमें हम ये बात देख लें. सो वेयर इज द रूब्रो टाइप ऑफ पाथवे. सो दिस इज द ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे, जिसमें दिस इज द सेरिबेलम. सो ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम के डीप न्यूक्लियाई हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबोज न्यूक्लियस हेयर समवेयर एंड द एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस. यहाँ से फाइबर्स निकले. दीज फाइबर्स डिकसेट ऑन द ऑपोजिट साइड एंड एंटर इनटू द रेड न्यूक्लियस. रेड न्यूक्लियस से फाइबर्स दोबारा निकले axons के. This is the cell body and you see axon is crossing again to the opposite side and then going down into the spinal cord. So ये pathway इस तरह से है, from the deep nucleus, opposite side, red nucleus, then fibers again to the opposite side and then going down. So it is decussating two times. One is this decussation, the other one is this decussation. So वापस लौट के बुद्धू उसी साइड पे आ जाते हैं जहाँ से निकले थे, बट ये decusation हो रही है at two times. Then the other pathway is called the dentothalamic pathway. Axons of the neurons of the dentate nucleus, which is also one of the, this is the largest one of the deep nuclei, travel through the superior cerebellar peduncle and crosses the midline to the opposite side, and the fibers end by synapsing with the cells in the contralateral ventrolateral nucleus. Okay, so अब इसकी भी हम डायग्राम पे डिटेल्स देख लेते हैं कि हाउ डज दिस पाथवे कोरिलेट और क्या इसके बारे में आपको याद रखना है. सो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ये सारे जितने भी पाथवेज हम डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किए हुए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल डेंटेटोथैलेमिक पाथवे, दीज फाइबर्स आर अगेन अराइजिंग फ्रॉम द डेंटेट न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल इन द सेरिबेलम. दे क्रॉस टू द मिड लाइन एंड देन दे end in this particular nucleus which is a nucleus of the thalamus. So ये thalamus में रिले कर रहा है और यहाँ से information जा रही है cerebral cortex पे. So ये वाला जो pathway है dentatothalamic pathway, it is sending information to the cerebral cortex. ये जो pathway हमने discuss किया था, it is sending information down to the spinal cord, to the muscles or the target organ. Okay, then ये सारी बात अब हम कर चुके. Now there is fastigial vestibular pathway. The axons of the neurons in the fastigial nucleus travel through the inferior से हर exit और entry pathway जो है वो किस cerebellar peduncle से गुजर रहा है, ये बहुत important है. So this one is going through the inferior cerebellar peduncle and end by projecting the neurons in the lateral vestibular nucleus on both the sides. Remember that some Purkinje cells axon project directly to the lateral vestibular nucleus as well. The neurons from the lateral vestibular nucleus form the vestibulospinal tract and it goes to the ipsilateral side of muscles. Try to find that out on this particular diagram and try to understand that. Okay, now fastigial pathway. So fastigial pathway में the nucleus is the fastigial nucleus जिससे cell body होगी, ज़ाहिर वो nucleus है, उसका axon निकलेगा और वो axon निकल के it is then traveling down. So after the vestibular nucleus it is going down on the same side and getting to the muscles to maintain the tone. ठीक है. Then there is a fastigial reticular pathway and the axons of the neurons of the fastigial nucleus again travel through the inferior cerebellar peduncle and end by synapsing with the neurons of the reticular formation. Axons of these neurons influence spinal segmental motor activity through the reticulospinal tract. So basically आपने और इन सब की समरी जो है वो efferent cerebral pathways की यहाँ है कि what is the globose emboliform rubral pathway, क्या काम करता है, influences the motor activity of the same side. Because याद है मैंने आपको बताया ये दो दफ़ा क्रॉस करता है, one in this direction then back to the original direction. इनका origin कहाँ से है इन fibers का, from these nuclei, और इनकी destination क्या है. So that's an important टेबल जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम. अभी तक हमने जितनी बात की है आपको आइडिया तो हो गया कि इट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, सेंस पोजीशन, वाइब्रेटरी मूवमेंट तो इसमें से नहीं गुजर रही. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सेंस ऑफ वाइब्रेशन, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ मसल स्पिंडल्स, जॉइंट एक्टिविटी, कौन सी मूवमेंट
कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन से या कौन से पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है. सो ब्यूटिफुली डिजाइंड सिस्टम, हर पार्ट का अपना अपना काम है. इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड दो, बट वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस. जितना पता है उतना स्टूडेंट्स को हम बताते रहते हैं. सो नाउ द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम. द सेरिबेलम रिसीव्स afferent information from cortex, cerebrum का हमने ये बात की है, from the muscles and the tendons and the joints. It also receives information concerning the balance from the vestibular. So obviously cerebellum is associated with controlling balance, with motor activity, और ये सारी information is fed into the cerebellar cortical circuit by the mossy fibers and the clambing fibers. और ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी हमने afferent fibers पढ़े हैं, ultimately वो mossy fiber और clambing fibers बनाते हैं. The axons of the Purkinje cells project with few exception to the deep cerebellar nuclei. The output from the vermis project to the vestigial nucleus. We have actually discussed all these outputs and inputs. Or physiologists have postulated that cerebellum function as a coordinator of the precise movement by continually comparing the output of the motor area of the cerebral cortex with the proprioceptive information. So basic point ये है कि जो cerebellum है, it is receiving information from the joints and the muscles and so many sensory receptor, and cerebral cortex is sending down the fibers for motor activity. Cerebellum is a very good relay center for the sensory input as well as for the motor output from the cerebral cortex. Sensory input कहाँ से आ रहा है? Via the spinal cord. और motor output कहाँ से जा रहा है? From the cerebral cortex. But cerebellum is in the middle position. It controls and coordinate and liaison between the sensory input and the motor output. So very very important topic, cerebellum. That's all about this chapter. आपसे मुलाकात होगी अब न्यूरो एनाटॉमी के किसी और लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.